Welcome to the class, all of you, once again. So, today we are going to discuss about the digestion in humans. Okay, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है इन ह्यूमन बींग्स, है ना. दैट इज डाइजेस्ट बाय व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का नीड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कैसे बनता है. दैट मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज क्या था, digestive glands, isn't it? Together they form a digestive system. In that we have discussed, you know that we have seen that in the alimentary canal it starts from mouth से शुरू होता है, that is buccal cavity, जहाँ पर सलाइवा मिलेगा आपको. और बकल कैविटी में कौन सा ग्लैंड रहता है, सलाइवरी ग्लैंड रहता है, isn't it? Salivary glands, three pairs of gland है, that is your parotid gland, submandibular gland as well as sublingual gland, isn't it? After that नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का. आफ्टर माउथ आता है ईसोफेगस, isn't it? This is the esophagus there. Then after this is a windpipe also, and then starts the stomach. In the stomach again the gastric glands are there, isn't it? Gastric glands जो कि gastric juices secrete करते हैं. उसके बाद में आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, isn't it? Your small intestine starts. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से secretions आते हैं. कहाँ से आते हैं? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिओडेनम. यस, सेकेंड पार्ट है आपका जेजुनम, एंड द लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द इलियम. अब ये डिओडेनम में पैनक्रियास, isn't it, एज वेल एज लीवर, इन दोनों जगह से ये कॉमन डक्ट से सीक्रीशंस आते हैं डिओडेनम में. यस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस एंटर करेगा, एंड लीवर और गॉल ब्लैडर से क्या आएगा, बाइल, isn't it? Then there will be after small intestine क्या आएगा, after small intestine there is a large intestine. Large intestine again three parts are there. कौन कौन से है? It is cecum. Yes, you can see cecum, then colon, ascending descending colon or transverse colon, and the last part of this large intestine is rectum. And the last part of digestive system, I will say, is the anus. As first was the mouth or the buccal cavity, last is the anus, है ना. So all these things we have seen. It forms what, ये सारी चीजें मिला के आपका बनता है digestive system. अब ये डाइजेस्ट कैसे होता है फूड, या ये सारे ऑर्गन्स में जाके किस तरह से डाइजेस्ट होता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट थिंग इन द क्लास. ओके, तो डायरेक्टली आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्टर देन. डायरेक्टली हम स्टेप्स ऑफ डाइजेशन यदि देखते हैं, यस, इफ वी सी द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो कौन कौन से स्टेप्स है डाइजेशन के. फर्स्ट इट विल बी इंजेशन. Yes, second is what? It is digestion. थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका absorption. फोर्थ आएगा आपका assimilation, students, isn't it? And the last is your egestion. Got it? The last step is the egestion. Am I right? So students, these are the 5 steps of digestion that we are going to discuss. Now, you all know again the definition of digestion. सभी को पता होना चाहिए क्या है, because we are doing the digestion. So digestion is a process जहाँ पर किसका breakdown हो रहा है, food का breakdown हो रहा है. That is an organic molecule which is broken down into simpler form. Yes, simple smaller molecule. Yeah, again what is important, किसके help से breakdown हो रहा है, it is breakdown is with the help of enzymes. Yes, in the previous class हमने enzymes क्या होते हैं और उसके common characteristics भी पढ़े थे, if you remember that. Yes, those who have missed that class, please watch the previous class, yes, of the digestive system there, where we have in detail discussed about all the organs of the digestive system. Please go through that. Okay, so now we will start with the first part, that is ingestion. Yes,
सो पहला पार्ट या फिर पहला स्टेप जो है डाइजेशन का वो है आपका इंजेशन. Ingestion में that means that is that we are taking the food inside, that is ingestion है ना. Food is ingested कहाँ से, और it is taken in by the mouth, yes, or through the mouth you can say. तो सबसे पहले हम माउथ से फूड को अंदर लेंगे, ठीक है. अब माउथ में क्या है, माउथ में हमको पता है देयर इज टंग, teeth, isn't it? So what will be done, this food, it will be broken into smaller particles with the help of teeth, है ना. दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा. दैट मीन्स when we will chew the food, when we will cut the food, yes, with the help of teeth. And what will the tongue do? Tongue will mix that food with the saliva. मुंह में जो saliva secrete होता है, सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. वी हैव सीन द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर. दिस आर द 3 वन. ये सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा सीक्रेट होगा. सलाइवा के साथ में फूड मिक्स होगा माउथ में, किसके हेल्प से, टंग के हेल्प से. यस, टीथ आल्सो हेल्प्स इन दैट. आफ्टर मिक्सिंग दैट, दैट मीन्स अब फूड को मॉइस्चर कर दिया गया, गीला कर दिया गया. अब ये सलाइवा में एक और चीज होती है. व्हाट इज इट दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा? Saliva is having an enzyme called as salivary amylase. Yes, or we also called it as a ptyalin, isn't it? So when the food mixes with the saliva, the enzyme that is present, yes, that is the ptyalin, it will act on that food. और फूड में जो स्टार्च कंटेंट है फूड का, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा. So we can say that yes, digestion starts in a mouth only. Got it, students? So what will I say? Ingestion, that means the food is taken in, food is taken in through mouth. Yes, then I am just मैं सिर्फ points में लिख रही हूँ. Teeth helps to break the food in smaller particles. Just अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला कि डाइजेशन यानी फूड को तोड़ना स्मॉलर पार्टिकल्स में, ये वाले स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं. ओके, द स्मॉलर एंड द सिंपलर फॉर्म दैट विल बी इजीली एब्जॉर्बेबल. ऐसे फॉर्म में उसको तोड़ना, उसको हम डाइजेशन बोलेंगे. वो एंजाइम के हेल्प से ही होगा. गॉट इट? सिर्फ हाँ तोड़ना, दैट इज नॉट द स्मॉलर पार्ट्स. ओके, तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स में हम तोड़ रहे हैं उसको, सो दैट अब एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सकता है. एंड आफ्टर दैट द टंग, व्हाट द टंग इज गोइंग टू डू? द टंग मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा. सलाइवा के साथ में फूड को मिक्स करेगा एंड मॉइस्चर इट. ओके, उसके बाद में क्या होगा? The enzyme, it will act on that. Am I right? Now enzyme, salivary amylase, और इसको हम प्यालिन भी बोलेंगे. It act on the food. I will discuss this part. ये वाला पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले स्टेप में पढ़ेंगे जो डाइजेशन में आएगा. यस, यहाँ पे सिर्फ आप याद रखो कि माउथ में ये चीज भी होगी, है ना, क्योंकि हम सिर्फ इंजेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम इस पे फोकस करेंगे. टीथ ने खाना मिक्स किया, तोड़ा, टंग ने मिक्स किया, और उसके बाद में टंग क्या करेगी? टंग वो खाने को अंदर स्वॉलो करने में हेल्प करेगी. गॉट इट? सो कैसे करेगी? द टंग, इट, remember this, it presses upwards
and back against what? Against the roof of mouth. ये क्या है? ये मैं ऐसा बता रही हूँ कि किस तरह से, जैसे हम यदि फूड को स्वॉलो कर रहे हैं तो कैसे कर दे। तो इस समय में जब ये मैंने गिटका अंदर, तो क्या हुआ, मेरी टंग ऊपर पैलेट को टच हुई और पीछे हुई, ताकि वो फूड अंदर की तरफ जाएगा। यस, सो इट प्रेसेस अपवर्ड्स एंड बैक अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ, एम आई राइट स्टूडेंट्स, एंड फोर्सेस द बोलस। नाउ ये बोलस क्या है? व्हाट इज दिस बोलस? इट इज नथिंग बट द फूड। जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया ना, अब हम उसको फूड नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलस बोलेंगे। ठीक है, सो नाउ रिमेंबर दैट दैट इज अ बोलस। सो इट फोर्सेस द बोलस टू go inside the throat. Yes, bolus forces the bolus what into throat, गले में उसको धकेलेगी, या फिर हम उसको बोलेंगे थ्रोट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट फैरिंग्स। यस, फैरिंग्स आप देखोगे, हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब भी फैरिंग्स का नाम आएगा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते तब भी फैरिंग्स का नाम आता है, बिकॉज इट इज अ कॉमन थिंग वेयर द फूड एंड द एयर बोथ विल एंटर। या आफ्टर दैट फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग हो जाते हैं, अलग से जाएगा वो, इजंट इट? सो इट इज गोइंग इनटू द थ्रोट और द फैरिंग्स। ओके, अब फैरिंग्स से वो खाना कहाँ जाएगा? फैरिंग्स से वो खाना जाता है ईसोफेगस से, थ्रू द, is it clear students? अब ये समय में एक चीज याद रखो, that is not needed here, but this is just for your information. You know, with the pharynx there is also larynx, that is a voice box, जिसको हम voice box बोलते हैं। तो जब हम खाना swallow करते हैं ना, at that time this larynx, yes, it is pulled upward, वो ऊपर की तरफ pull किया जाएगा to bring it close into the where with the flap एपिग्लॉटिस, उसके ऊपर थोड़ा सा जो एक वो फ्लैप रहता है एपिग्लॉटिस का, वो पड़ जाएगा, ताकि खाना आपका कहाँ नहीं जाना चाहिए? विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। Yes, so in that way the food and the air, they are separated. Remember this thing. I'll tell you this when we will do respiration also in detail, but here just remember this thing. Okay. So now from here the food enters where? The food enters, or food, or we can say bolus, isn't it? It enters the esophagus. Yes, esophagus, or we also called it as what? Food pipe. I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया? So this is what is done in the ingestion. या अब ईसोफेगस में फूड जाने के बाद में वो फूड ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? फ्रॉम ईसोफेगस the food goes into the stomach. Yes, from esophagus it enters the stomach. जब स्टमक में जाएगा तो किस तरह से वो फूड पाइप से जाएगा? It is by the help, or it is by, I can say, the movement is called as peristalsis movement. Now what is this peristalsis movement? अब कोई पाइप में मैंने कोई चीज डाल दी, या तो वो चीज डायरेक्टली वो पाइप में आगे आगे अपने आप तो नहीं जाएगी। आप करके देखना, कोई पाइप लेना एंड यू टेक बहुत अच्छी कुछ काफी मोटी चीज को उसके अंदर फंसा देना, अपने आप वो आगे आगे जाएगी क्या? नहीं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पीछे से पुश करना पड़ेगा, या पाइप को दबाना छोड़ना, इस तरह से करना पड़ेगा, तब वो चीज धीरे धीरे सामने जाएंगे, इट विल मूव। That is nothing but what happens in the peristalsis. Yeah, so this peristalsis, it is an involuntary contraction and relaxation of circular muscles of the digestive tract. जो सर्कुलर मसल्स रहेंगे ना, उसमें वहां पे ट्रैक्ट में और इसोफेगस के, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रिलैक्स हो गए ना, इस तरह से वो हो गए। इसके कारण क्या होगा? जो फूड पाइप के अंदर है वो धीरे 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 करके आगे आगे जाएगा, इन दैट वे इट विल एंटर द स्टमक। I hope this is clear. So this is what is called as ingestion. Now the next step in the digestion is what? It is the digestion only, है ना?
दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. अब डाइजेशन में क्या होगा? खाना तो हमने अंदर ले लिया, मिक्स हो गया. उसके बाद में इसोफेगस में भी हमने डाल दिया और स्टमक में भी डाल दिया. अब डाइजेशन होगा. लेकिन स्टमक में डाइजेशन शुरू होने के पहले मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट द डाइजेशन स्टार्ट्स इन द mouth also, isn't it? So the digestion of the food starts in mouth. I can say it starts in mouth only. लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन नहीं होगा, या जस्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का ही डाइजेशन होगा. या बिकॉज इट माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्यालिन और अमाइलेज, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, ये क्या करेगा? ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में. माल्टोज एक डाइसैकेराइड है. यस, it is a type of a disaccharide. So the enzyme here, it is what? Starch is converted to maltose by salivary amylase. Or it is also called as stearin. Now remember, आज हम जितने भी enzymes लिखेंगे, हम enzymes का नाम green color से लिखेंगे. Got it? Now if you will write like this, students, it becomes very easy to remember the things, है ना? स्टेटमेंट में लिखने के बदले आप इसको ऐसे लिख दो, स्टार्च कन्वर्टेड टू माल्टोज विद द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. याद हो गया हमको. वेयर इट इज डन, दिस इज हैपनिंग इन द माउथ. इट स्टार्ट्स इन द माउथ. लेकिन द डाइजेशन स्टार्ट्स देयर फॉर द स्टार्च, बट उसको कंप्लीट नहीं होगा वहां पे. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज नॉट डन इन द माउथ ओनली, बिकॉज क्या होता है, मुंह में खाना थोड़ी देर के लिए रहता है ना. जितनी देर के लिए रहता है उतनी देर में जितना भी डाइजेशन हो सकता है स्टार्च का, उतना वहां पर होगा. रिमेनिंग आगे में होगा. यस, सो आई कैन से डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसके बाद में दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. क्यों बोल रही हूँ पार्शियली डाइजेस्टेड? क्योंकि स्टार्टिंग तो हो गई है. तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड enters the stomach. कैसे एंटर करेगा स्टमक में, ये सब हमने पढ़ लिया. अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दिस थिंग, है ना. इसोफेगस से एंटर करेगा. अब ये फूड को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे बोलस. यस, सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो माउथ से स्टमक में जाएगा उसको हम बोलेंगे बोलस. बोलस कैसा रहता है? एसिडिक रहता है. यस, इट इज एसिडिक देयर. Because saliva is also nearly slightly acidic. Saliva slightly 6.8 pH रहता है. वो slightly, बहुत acidic नहीं रहेगा, लेकिन yes, basic भी नहीं रहेगा. वो थोड़ा सा एसिड की तरफ रहेगा, तो स्लाइटली एसिडिक रहेगा. और जैसे जैसे वो बोले सब स्टमक में आएगा, वहां पर वो फुल एसिडिक हो जाएगा. बिकॉज स्टमक में क्या है? व्हाट इज देयर इन द स्टमक? देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Yes, HCl is there. Yeah. So now this bolus has entered into the stomach. ठीक है. अब stomach में क्या होता है? What happens in the stomach? In the stomach there is a gastric gland, and the gastric gland secretes what? It secretes hydrochloric acid. Then it also secretes some enzyme. Which is that enzyme which is secreted in the stomach? It is pepsin, है ना. और उसके साथ साथ म्यूकस भी होता है. इनका हमने क्या, सभी का रोल क्या है, सभी का फंक्शन क्या है, हमने पहले की क्लास में देख लिया. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. So today we are more focusing only on how the digestion takes place. Okay. So in stomach, students, what happens? Protein is converted to peptides. Okay. Protein is converted to peptides. सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन जो था, चलो मैं लिख देती हूँ. ये हो गया आपका, ये हो रहा है आपका माउथ में, isn't it? This happens in the mouth. I will write like this. Okay. Now in the stomach, what is happening? First of all, I will say the pepsinogen
वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, और पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव प्रोटीन है, प्रोटीन सॉरी एंजाइम का एक्टिव पार्ट है, ये इनएक्टिव रहता है पेप्सिनोजेन। यस, इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। अब ये जो पेप्सिन है ये किस पे एक्ट करेगा, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। तो जब प्रोटीन स्टमक में आएगा फूड के अंदर, yes, this protein is converted to what? It is converted to peptides or peptones. ओके यदि इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो उसमें क्या होता है, एक और एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन जो रहता है ना, तो मिल्क प्रोटीन, यस, और हम उसको सीजीन भी बोलते हैं, इट इज कन्वर्टेड टू पैरासीजिन। बट दिस रेनिन इज ओनली यूज्ड फॉर द इन्फेंट्स, वो एडल्ट्स में नहीं रहता है रेनिन। ओके, दिस एंजाइम रेनिन is only present in an infants. Remember, this is not present in, only present in infants. Remember this thing. Got it? लेकिन एडल्ट्स में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कौन करेगा, इट विल बी डन बाय द एंजाइम पेप्सिन। Look, green color, they are the enzymes. Got it students? तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में। अब याद रखो आप, गैस्ट्रिक जूस जैसा रहता है, और हाँ, स्टमक का मीडियम क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि जो आपका एंजाइम पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम पे ही काम करता है, इसीलिए वहां का मीडियम एसिडिक रहेगा। और एसिडिक मीडियम कौन बना रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हु इज प्रोटेक्टिंग द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, कि कौन प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक की लाइनिंग को एसिड से, वो कर रहा है म्यूकस, है ना, ताकि स्टमक की लाइनिंग क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए बिकॉज ऑफ द एसिड। वो एसिड एक तो एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि प्रॉपरली डाइजेशन हो, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं फूड के थ्रू, इट विल किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सो दिस थिंग इज हैपनिंग इन द स्टमक। क्या? फ्रॉम द स्टमक नाउ द फूड एंटर्स इनटू where, कहां पर एंटर करेगा फूड, फूड एंटर करेगा इंटेस्टाइन में। yes, it will enter into the intestine, specifically I will say in the small intestine। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पहला पार्ट जो कि जिसको हम बोलते हैं डियोडेनम। so what happens in a small intestine now? हम डाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, yes, कि क्या फूड का डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स, अब जो फूड आता है ना, ये बोलस, अब इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम। यस, बोलस when enters small intestine, it is now, क्या बोलेंगे, CHYME, काइम। काइम जो रहेगा ना, काइम एसिडिक नहीं रहेगा, वो अल्कलाइन हो जाएगा। गॉट इट? सो रिमेंबर, ये दोनों चीजें जब भी हम स्टमक तक फूड को रखेंगे उसको हम बोलते हैं बोलस। सॉरी, जब स्टमक तक एंटर होगा, स्टमक में ही रहेगा वो बोलस, और जब वो इंटेस्टाइन में आएगा नाउ इट इज काइम। क्लियर? क्योंकि इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है स्टूडेंट्स, they will be activated only in alkaline medium। क्लियर? सो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को अल्कलाइन मीडियम कौन करवाता है, वहां पर आपका बाइल जो है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर, दैट बाइल enters into the duodenum through a bile duct। yes, common duct is there, and it is responsible to make the alkaline medium of the intestine, क्योंकि बाइल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। गॉट इट? सो नाउ इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स रहेंगे और कौन कौन सा फूड डाइजेस्ट होगा, दैट वी विल डिस्कस हियर। इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले बाइल में जो बाइल सॉल्ट्स रहता है, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट्स।
फैट्स जो कि बहुत मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, फैट्स के मॉलिक्यूल्स, isn't it? तो उसका सरफेस टेंशन कम करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि जो भी एंजाइम रहेगा ना वो उसके ऊपर एक्ट कर सके. So I just write here that the bile reduce surface tension of fats and break them into tiny molecules so that enzymes can act on it. Got it? ये काम है आपका बाइल का. इसके साथ साथ बाइल अल्कलाइन मीडियम मेंटेन करता है. दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द बाइल. ओके, आई विल राइट दैट ऑल्सो. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, बट स्टिल आई राइट हियर. बाइल ऑल्सो मेक्स alkaline medium for enzymes. Got it? So we can write here that the fat, yes, they are formed or they are emulsified. फैट को इमल्सिफाइड किया जाएगा, दैट मीन्स स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल. यस, विद द हेल्प ऑफ द बाइल. बाइल में कोई एंजाइम नहीं है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट. ओके, एंड the acidic chyme is also converted to alkaline chyme. Yes, due to the bile. Why? Because bile is having sodium bicarbonate. Yes, because of this sodium bicarbonate ये एसिडिक से alkaline हो जाएगा. This is done by the bile. अभी इसके अलावा जैसे पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है, पैनक्रिया से डिओडेनम में एंटर करेंगे और उसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं. Yes, so which are this enzyme present? The pancreatic juice have enzyme amylopsin, yes, trypsin and strepsin. ठीक है, अब इनके काम क्या है? सो जो अमाइलोप्सिन है, जिसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं, अमाइलेज क्या कर रहा था? माउथ में भी स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा था. जो रिमेनिंग स्टार्च बच जाएगा वो यहाँ पर डाइजेस्ट होगा. यस, सो स्टार्च इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू maltose or it is digested as maltose. This is done by the amylopsin. Okay, देन उसके बाद में ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो क्या करेगा? जो बचा हुआ प्रोटीन रहेगा, कुछ प्रोटीन तो स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, जो दूसरा प्रोटीन रहेगा जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको डाइजेस्ट करेगा पेप्टाइड्स में. प्रोटीन और जो हाँ पेप्टाइड्स भी बने थे वहां पे स्टमक में, दे विल बी डाइजेस्टेड स्टूडेंट्स इनटू, आई कैन से, मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स और छोटे पेप्टाइड्स में, एंड अमाइनो एसिड. ठीक है, और द तीसरा जो आपका न्यूट्रिएंट रहेगा, दैट इज योर, व्हाट इज इट? फैट्स. यस, सो द इमल्सिफाइड फैट्स, जो बाइल ने फैट्स को इमल्सिफाइड किया था, this emulsified fats, it will be broken down again or it is converted to fatty acids plus glycerol. Got it students? So ये enzyme कौन से आएंगे यहाँ पे? I'll just write it down the enzymes now. Starch, इसको it is your amylopsin.
और यू ऑल्सो कॉल्ड इट एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि ये पैनक्रियास से मिला है, सो दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। यस, ऊपर जो अमाइलेज था वो सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड्स का था, दैट्स व्हाई इट वाज गिवन एज अ सलाइवरी अमाइलेज। दोनों अमाइलेज का काम एक ही है। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन, और ये रहेगा आपका स्ट्रिप्सिन, या फिर हम इसको लाइपेज भी बोल सकते हैं। इन अ वेरी सिंपल वे वी कैन आल्सो टेक इट एज अ लाइपेज, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ अब इसके यहाँ इतना तो डाइजेशन होगा, इसके अलावा भी यदि कुछ बच जाता है, yes, remaining peptides are converted to amino acid by the intestinal juice. ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक जूस स्टूडेंट्स। just a minute. Yes, this was the pancreatic juice. What was doing? अब इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस भी रहता है, इंटेस्टिनल जूस भी, उसके पास भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं, और वो भी क्या करेगा, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। यस, अमाइनो एसिड्स में सो हम लिख सकते हैं कि द रिमेनिंग पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड, यस, बाय द इंटेस्टिनल एंजाइम्स देयर। इसके साथ साथ जो माल्टोज बनेगा, है ना, ये जो माल्टोज बन रहा है स्टार्च से माल्टोज, ये माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। यस, उसके बाद सुक्रोज जो बनता है, सुक्रोज का भी ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। Yes, sucrose is split into fructose as well as glucose. Similarly, the lactose is converted, or it is split up again into glucose and galactose. तो आप क्या देख सकते हो कि मोस्टली जो शुगर पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, isn't it, in our body, isn't it? So this is what is it. And the last one, I'll also write it down. Yeah, fats, isn't it? Emulsified fats. Emulsified fats are converted to fatty acids and glycerol. चलो इनके एंजाइम्स के नाम लिखेंगे. We will write the name of the enzymes again in green color. Peptides to the amino acid. Remember, intestinal juice का जो एंजाइम रहेगा उसको हम बोलते हैं एरिप्सिन. What we call it as? It is called as एरिप्सिन, which is responsible for digestion of protein. Got it, students? Then या फिर हम इसको पेप्टाइडेज भी बोलते हैं. You can write it down, पेप्टाइडेज. Then maltose एंजाइम है maltase. सुक्रोज का एंजाइम है सुक्रेज. लुक, दिस इज इजी टू रिमेम्बर. लैक्टोज का हो जाएगा लैक्टेज. एंड इमल्सिफाइड का है लाइपेज. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इंटेस्टिनल जूस. तो इस तरह से हमारा प्रोटीन्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, दैट इज, या फैट्स, ऑल एवरीथिंग इज डाइजेस्टिंग. So complete digestion takes place in small intestine. Digestion starts in mouth and it is completed in small intestine. Yes, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. गॉट इट? और इंटेस्टाइन में स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, सभी चीज डाइजेस्ट होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में आपके पास बाइल है जो लीवर से आता है, विच कम्स फ्रॉम द लीवर. Then you have pancreatic juices, which again comes from the pancreas, and there are intestinal juices. All of them, they have the enzymes. Bile don't have enzymes. Okay, pancreatic juice and the intestinal juices have enzymes, and then that enzymes, they will help in digestion of the food. So complete digestion takes place in small intestine. Remember this thing, students. So after digestion, the next step is what? It is your absorption. I will write here, complete digestion takes place
in small intestine. Yes, and digestion starts, ये सारे आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं. Digestion starts in mouth. Just remember this thing. है ना? So after digestion, the third step is absorption. अब फूड का डाइजेशन तो हो गया, स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया फूड का, जो कि हम एब्जॉर्ब कर सकता है हमारी बॉडी के सेल्स. यस, तो अभी इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, it the last part of the small intestine, that is ileum, yes, it has some finger like processes called as a villi. Yes, and villi are responsible for absorption of food. This villi are also present in large intestine. Yes, because some part of absorption of water is also takes place in large intestine. Got it, students? I hope this is clear. So, absorption occurs in small intestine and little in large intestine. I hope this is clear. किस तरह से होगा? With the help of villi. Yes, villi which is present in the intestine. With the help of villi, the digestion takes place there. Okay, so जो अमाइनो एसिड रहता है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, हमने देखा कि मोस्टली सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में. देन कुछ पार्ट फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज पे. दीज ऑल आर द सिंपल शुगर. स्टार्च द सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया, isn't it? So अमाइनो एसिड वो भी सिंपलर फॉर्म ऑफ क्या है? It is simpler form of the proteins there. Got it? So the amino acids and the simple sugar like glucose, galactose, fructose, they all will be absorbed through this thin epithelium of the villi. So we can write here amino acid, yes, and glucose, galactose, fructose, ये सारे क्या है? These all are the simple sugars. They are absorbed, yes, through विलाय. ये विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड वहां से क्या होगा? दे विल रीच द ब्लड कैपिलरीज एंड फाइनली इनटू द, वहां से ब्लड सर्कुलेशन. गॉट इट? क्या? बिकॉज द विलाय जो रहता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने देखा था, दे आर लाइक दिस ना, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं. अब ये विलाय के साथ में आप जब उसका फिगर देखोगे ना, so you will see that the some capillaries they are also associated with that. Okay, so जब फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होता है ना, तो वो ये वेन्स के सॉरी कैपिलरीज के अंदर एंटर होगा, और ये कैपिलरीज उसको बाद में कहाँ से, यहाँ से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जाता है, तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगी और यहाँ से वो ब्लड में एंटर हो जाएगा. कैपिलरीज के पहले कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, उसके बाद में मेन आर्टरीज में वो चला जाएगा, एंड इन दैट वे इट विल एंटर द ब्लड सर्कुलेशन. गॉट इट? सो दिस इज फॉर द अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर. अब क्या बच गया? फैट्स बच गए. सो हाउ द फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब? द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, the fatty acids and glycerol, they are absorbed again into the lymph. वो blood circulation में नहीं जाएंगे.
villi से yes absorb हो गए, but they are absorbed, remember, into lymph vessel. Yes, remember this, into lymph vessel, या फिर हम उसको बोलते हैं लैक्टियल. ये भी आपको कहाँ मिलेगा, आपको आप जब विलाय का स्ट्रक्चर देखोगे ना, यू विल फाइंड दिस. यस, तो दे विल एंटर देयर. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएंगे, वो लिम्फ वेसल या फिर लैक्टियल में जाएंगे, और उसके बाद में वहां से दे विल एंटर द लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए बाद में वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए. इज दिस मच क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? सभी का एक जैसे नहीं हो रहा है. यदि if you are talking about the fats and the glycerols, they will be absorbed through the villi, but it will be absorbed by the villi, and it will enter into the lacteal or the lymph vessel, and then they will enter the lymphatic system. From there they will enter the bloodstream. Whereas the amino acids and the simple sugars, they will again be absorbed by the villi. They will be taken by the blood capillaries, and then they will enter into the blood cell. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन में व्हाट हैपेंस? ऑल वाटर, यस, इन लार्ज इंटेस्टाइन all, mostly I can say all water is absorbed, yes, from the undigested food. क्योंकि जो digested food है, that digested food is तो वो तो absorb हो गया पूरा small intestine में. तो जो undigested food रहेगा, that will enter the large intestine. Yes, in that undigested food again there will be some sort of water का amount रहेगा. वो सारा water आपका large intestine में absorb कर दिया जाएगा. Small intestine में भी water absorption होता है from the food, but the remaining food which is not digested there in the small intestine, जिसको हम as a वेस्ट करके बाहर निकालने वाले बॉडी के, उसमें से भी पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो हैविंग व्हाट? विलाई. यस, थ्रू विलाई. विलाई उनके वहां पर भी है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, अब ये जो फूड रहेगा ना, फूड कैसा बन जाएगा? पानी पूरा निकाल देंगे तो सेमी सॉलिड बन जाएगा. Yes, it will become a semi-solid now. So we can say that the undigested food becomes semi-solid in large intestine. Got it? So we have seen ingestion, we have seen digestion, now we have seen absorption. Yes, so how the food is absorbed there. Now the fourth step, चौथी step कौन सी है digestion की? assimilation. अब assimilation में क्या होता है? What happens in assimilation? Assimilation, it is students, it is conversion. It is conversion of absorbed digested food into the body material, यानी सारे सेल्स तक पहुंचना. देखो, फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया गया, ब्लड में भी चला गया. अब ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल्स के पास जाएगा, जहां पर उसकी जरूरत है, और जहां पर उसमें से क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी. फ्रॉम द फूड वी कैन गेट द एनर्जी, इजंट इट? So this absorbed and digested food is transported through दो सिस्टम होती है. जैसे हमने बोला कि कुछ खाना जो रहेगा, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, जबकि फैटी एसिड लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, इजंट इट? सो I can say that the absorbed
food transported through, I will say that it is transported through, first is your hepatic portal system. Yes. और दूसरा हम बोलेंगे इट इज योर lymphatic system. Yes, hepatic portal system और lymphatic system. hepatic portal system से कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जो सिंपल शुगर्स रहेंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज. यस, सिंपल शुगर्स, देन अमाइनो एसिड्स, उसके बाद में कुछ विटामिन रहते हैं, है ना. कुछ मिनरल्स भी रहते हैं जो हमारे फूड में रहते हैं. ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होगी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. क्लियर. और लिम्फेटिक सिस्टम से किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? लिम्फेटिक सिस्टम से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यस, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा. जब ये सेल में चले जाएंगे इसमें से मोस्टली जो सिंपल शुगर्स है स्टूडेंट्स, सिंपल शुगर में भी ग्लूकोज के फॉर्म में जब वो रहेगा, दैट ग्लूकोज इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स. यस, सिंपल शुगर्स में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज यूज्ड एज एनर्जी सोर्स. Yes, you will go get to know when we will discuss the respiration, किस तरह से energy we will obtain it from the glucose, that I'll explain you that. Just remember that glucose is used as an energy source there. And the fats here, fats are generally used for what, students? They are used for synthesis. Yes, फैट्स को सिंथेसिस के लिए यूज करेंगे. अब आप बोलोगे मैम अमाइनो एसिड को कैसे स्टोर करेंगे? अमाइनो एसिड्स आर नॉट what stored. It cannot be stored. Yeah, amino acid, they serve as, I will write, you can write it down, they serve as building blocks of प्रोटीन, है ना. प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बट अमाइनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर. तो जो एक्सेस ऑफ अमाइनो, जितना अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को लगेगा उतना यूज किया जाएगा. एंड जो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड रहेगा, इट विल बी ब्रोकन बाय द लीवर. यस, जिसको हम बोलते हैं डी अमाइनेशन. वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी अमाइनेशन, यानी अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करना, है ना. जहां पर वो अमाइनो एसिड ब्रेक होके क्या बन जाएगा? यूरिया. और यूरिया का हमारी बॉडी क्या करती है? व्हाट डज यूरिया इज डन फ्रॉम आवर बॉडी? यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी. यस, तो यूरिया को बाहर निकाल दिया जाएगा एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. यस, सो जो ग्लूकोज रहेगा, दैट इज सिंपल शुगर, वो स्टोर किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. Just you can write it down if you want. Yes, glucose is stored in a form of a glycogen. जब उसकी जरूरत नहीं रहती ना, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज रहेगा, तो उसको स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में. जब फिर से जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, एंड अगेन द ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एन एनर्जी, isn't it? But amino acid cannot be stored. That's why it is deaminated, the excess of amino acid, and it is converted to urea, which is excreted from our body. Got it, students? Yeah. So thus we can say that this assimilated food is used by the body cell for obtaining energy, for growth and repair of the body. Yeah, we can write it down that the assimilated food is used by body cell for obtaining what? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाएगा. और एनर्जी क्यों चाहिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. यस, एंड सम रिपेयर पार्ट ऑफ द बॉडी, कुछ रिपेयर हो रहा है, कुछ यस
For that it is used, and there are so many different processes for that the energy is used by the body. Okay, after that the last step is egestion. अब egestion में क्या होगा, जो undigested food था, है ना, undigested food जो large intestine में था, जो कि सेमी सॉलिड हो गया था अभी, बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट वाज टेकन आल्सो, या फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन and enters रेक्टम पार्ट, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, वहां एंटर करेगा, और आई विल राइट एंटर्स एनस लिख देंगे more properly, just a minute. Through rectum we will write it down. Yes, it enters the anus through rectum, है ना. Then from anus the undigested food is excreted. Similarly, urea, it will be also excreted in this way only. Yeah, so this is what is called as egestion. I hope you all, आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से 5 स्टेप्स में पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमारा होता है, फूड को अंदर लेने से लेके जो एक्सेस ऑफ और द वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका बॉडी के बाहर तक रिमूवल करने का, है ना. दिस वी हैव डिस्कस इन डिटेल. स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट स्टूडेंट्स, आप लोग आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड इफ पॉसिबल डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड यस, फॉर मोर डिटेल studies and more proper courses, you can also download the Earth Academy app. Yes, so I was telling that, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आज जो पढ़ा डाइजेशन में ये सारी चीजें, regions of alimentary canal, secretion, enzyme, nutrient and product after digestion. ये जो टेबल मैं आपको दे रही हूँ, this will be very useful. हमने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, वो सारी चीज आप ये टेबल से देख सकते हो. यस, यू कैन टेक इट फ्रॉम द टेबल एंड यू कैन रिमेम्बर दैट थिंग. जैसे इन द माउथ व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, इन द माउथ देयर इज सलाइवा और द सलाइवरी ग्लैंड्स. यस, एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है ना. इसोफेगस, देयर इज नो एंजाइम देयर. Stomach, it is having gastric juice with hydrochloric acid, isn't it? Enzyme pepsin is there, which converts protein into polypeptides, as well as renin, which is only found in infants. It converts the milk protein into the curdled milk, that is the casein there. Similarly, small intestine, इसमें duodenum जो रहेगा, वहाँ पे bile enter होगा liver से, pancreatic juice enter होगा pancreas से. बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बट बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है और फूड को अल्कलाइन करता है. एम आई राइट? ट्रिप्सिन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में. सिमिलरली अमाइलोप्सिन स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में. ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. उसी तरह से डिओडिनम में ये है. देन इलियम जो लास्ट पार्ट है आपका इंटेस्टाइन का, वहां पर इंटेस्टिनल जूस रहेगा, जिसके पास ये सारी एंजाइम्स है, एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज एंड लैक्टेज. सुक्रेज को हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज इन्वर्टेज. What are they doing? They are converting this protein into amino acids, maltose to glucose, sucrose to glucose and fructose, fats to fatty acids and glycerol, and lactose to glucose and galactose. Got it? So these all the enzymes that I have given you, or the enzymes are working on what and what they are digesting, and what is the final product, and in which part of the organ I can say this enzymes are present. Everything is given in the table. So this table is very useful, students. Go with this table. For more such information, you can definitely
download the app here. So thank you for attending the class. I hope you all understood what we have done there. So till the next class, keep learning. All the best for your studies. And yes, if you want to download the Arth Academy app, this is the link which I am providing you. Yeah, you just take this link and you can, what you can do, you can uh, download the app. Got it? So till then, all of you, bye bye. Take care. See you soon. Bye.